answering 28 questions, 28 correct questions. So 28 questions, if you attempt only 28 questions and all 28 questions if correct, then yes, you can qualify this paper. But all of you, see, I think this is the second session in the series. So I think few of you would be repeaters also here, few of you would be freshers. So I would be just catering the freshers kind of. I hope I am audible to all. I don't think there is any sound. Yes sir, you're audible. लेकिन जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो उनका ऑडियो थोड़ा 2 मिनट बाद आता है. ऑडियो वीडियो फर्स्ट आ जाता है, ऑडियो थोड़ा 1 मिनट बाद आता है. Okay, fine. Okay, thank you. So first I'll brief about this paper, the structure, everything. Then only we'll take up the questions or any of your doubts. So all of you, as I was saying, that you have to attempt how many questions? If you attempt around 28 questions, all 28 questions being correct, certainly you can qualify this paper. But we know 100% accuracy is next to impossible. So if 100% accuracy is next to impossible, what does it mean? Means that yes, you have to attempt around 40 questions. See, there's no hard and fast rule here. You have to attempt around 40 questions. So if you attempt around 40 questions and if you get 5-7 questions wrong, still you can easily qualify this paper. So now all of you here in this exam, when you have to answer or attempt around only 40 questions, and how much time you get? 120 minutes. It means you get roughly 3 minutes for each question. So first of all of you tell me, is this paper tough or this paper is easy or this paper is of medium level? See, from 2011 to 14, this paper's marks were also counted. Okay, from 2015 onwards, it became qualifying in nature. Now this syllabus, okay, now we'll first take up the syllabus, and with syllabus only we will discuss the difficulty level and the type of questions and what is the problem. In this paper CSAT, though it's qualifying in nature, what is the problem with the students? The only problem, or I can say the main problem, is that they are out of practice. The main problem is that the students, they are out of practice. So all of you first will take up the syllabus here. So now all of you, when we look at the syllabus, then first is your comprehension. Now when we talk about the comprehension part, then the passages. Now all of you, out of 80 questions, total how many questions we get in this exam? We get 80 questions in this exam, and out of 80 questions, the verbal ability part, that is the reading comprehension part, it consists of around 25 to 28 questions. It consists of around 25 to 28 questions. Now, what is the problem with the comprehension part? What is the problem with the comprehension part? The passages, nowadays, if you go through the passages,
the size of the passage is small and the questions is also many a times direct, but the problem is the options are too close. The options are too close as well as too confusing in nature. Now, to strengthen your comprehension part, that is the verbal ability part, few things very, very important. First of all, you must have a good vocab. You must have a good vocab. And all of you, how can you increase your vocab? There are few very simple exercises. That is, one, you all are in the habit of reading newspapers and all. Just note down any new term. Whenever you come across any new term, you have to note down, write down the meaning, just understand the meaning. Because the comprehension, whenever there are passages, for example, if there are 8 passages, then remember the 8 passages, some will be, some character of the passage will be what? Economic. Some will be agriculture based. Some will be ecology based. Some will be polity based. So whatever you study in your GS, general studies, okay, paper 1, from the same topics only you get the passage. But yes, you don't get the passage from the textbooks. You get the passages from international journals, the magazines, okay, or newspaper articles and all. Now, if you come across agriculture based passage, then certainly the terms which are there, if you already know the meaning of the terms used in the passage, then certainly you can understand the passage in a better manner. Otherwise, you'll keep guessing. Otherwise, you keep guessing. So therefore, all of you, healthy vocab is very, very important. So you have to, maintain kind of record of all the words which you come across. Whenever you study also, whenever you study your textbook or study material or in classroom also, whenever you come across new word, then just note it down. Because when you use that word, okay, whenever you use technical word, whenever you use legal word in your answer, mains answer writing, okay, it helps you, it beautifies your answer, it helps you in scoring more marks. It's not only that you will be, just increasing your vocab for this CSAT and all, it will help you in your answer writing as well. Now, second thing, one very common, there's a very famous book, Word Power Made Easy. If you are a beginner, see, the thing is, there's no universal rule. There is no universal rule. If you are a beginner, then I always ask a beginner that you practice Word Power Made as Easy, because there you come across the root words. So there are root words, similar words. Okay, so you understand the meaning, you understand the difference between different terms. Egoistic and egotistic. So you understand the difference between the words. So yes, Word Power Made Easy. And third is, if you start reading a lot and if you come across same words, okay, again and again, then certainly you understand the meaning. See, you would have realized one thing, okay, whenever you were a kid, okay, each and every time it wasn't that you were, opening the dictionary only, or you're asking the meaning of the words from your teacher or your parents or your, seniors. It was that few words you come across, every now and then you understand the meaning of those words. Same thing happens here also. So all of your comprehension is really integral part, and it's very, very important. You cannot leave comprehension and qualify CSAT. Okay.
And as I told you, all options are really too close. And the interesting thing is that after attempting the passages, okay, questions, most of the students, they feel their answer is correct. But when they cross check their answer, they find that, their answer is wrong. Why? Because you don't read each and every word, each and every sentence carefully. You don't understand the difference between assumption, conclusion, inference. Until or unless you know the difference between assumption and inference, how can you answer? You'll feel that all are same. You feel all are same. Yes, conclusion is also same. That is same. All are same. This is good. So for comprehension, all of you read like anything. And whenever you say read between the lines, then yes, you read, understand. Then sometimes if the passage is lengthy, in that case, what is the general approach? Students first read the question. Many of the students, they first read the question and then they read the passage. Because whenever there will be lengthy passage, certainly there will be more number of questions. And if there are suppose 3 questions or 4 questions based on a single passage, then out of 3-4 questions, 1 question will be certainly very direct. You can find the answer of 1 question in the passage itself. So yes, if you have read the question before and then you read that same sentence in the passage, then you can easily mark the answer. And it helps in connecting. Otherwise, for the smaller passages, the type of passages which you are getting in exam nowadays, okay, if you go through the 2021 CSAT paper, believe me, this year's paper was really tough. I've come across many students, who scored very good marks in paper 1. And in fact, selected candidates, IPS and IRS, they also failed to qualify CSAT because, they were overconfident. They didn't practice enough. This year's paper was really tough. The passages were tough. The options were very confusing in nature. So many students, yes, they performed well in paper 1, but they failed to clear prelims because they failed to qualify this. Means certainly you can't take this paper for granted. Remember, UPSC is taking prelims paper, UPSC is asking DS paper to CSAT. Then certainly they will have some standard, some level. And they always want the students to put up some effort for any. It must not be a kind of cakewalk that you wake up on the exam day, you just give GS paper 1 and then you sit in the examination hall and clear, qualify the paper. Then what will be the point of such paper? So, and the standard of the questions, can be raised. Next time the questions can be tougher. And remember, you cannot complain about it. If they increase the, toughness of the questions, then you cannot complain. There are no excuses in this exam. Remember, there are no excuses. There is a CSAT paper, yes. You will have to prepare for this paper. You will have to make sure that, yes, if you are attempting previous year paper or mock paper at home, then you are easily scoring 100. Because if 3 papers, 4 papers, 5 papers, in all the papers, if you score around 100 plus, then only there's a high probability that you can easily qualify this CSAT paper, or else not.
But see, the thing is, I don't want you all to panic. I don't want you all to panic, because I've seen that already, maths and reasoning questions, especially maths questions. Many students, as soon as they come across maths questions, okay, they are frightened. So no need to be, because the level of the questions is very simple, very easy. Okay. Now, all of you, this is very interesting question, yet 2018 question. Okay. So before I take up, the syllabus and all, okay, all of you just read this question. All of you try to answer this. What, 10 also has answer, 20 also has answer, 30 also has answer. Okay, very good. Only 40 is remaining. All of it, this is one question which I call it as a pure, aptitude based question. Why? Because the beauty of the question is that if you don't know any formula of, profit and loss, percent, still you can read the question, you can mark the answer if your overall understanding is clear. If your overall understanding is clear. So I hope you all have read and attempted the question. So now all of you read the question along with me. Given a shopkeeper sells an article at ₹40 and gets X% profit. However, when he sells it at ₹20, he faces same percentage of loss. What is the original cost of the article? Okay, means you have to find the cost of the article. Okay, and then look at the option ₹10, ₹20, ₹30, ₹40. Now all of you, please develop this habit. Very, very important. Whenever you read the question, look at the options. अजय, whenever कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद ऑप्शंस भी देखो. See dear, क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में ही रहेगा. The thing is, I can be bilingual, okay, between, but the questions are in English only. Focus main मेरा यही है, but yes, I hope you will understand everything. Now, in this question, what is given to us? That a shopkeeper, when he is selling the article at ₹40, he is making profit. They understand the question. And when he is selling it at ₹20, he is suffering loss. Now, all of you tell me, if you are selling at ₹40 and you are making profit, and if you are selling it at ₹20 and you are suffering loss. Now all of you stop attempting and stop, answering. Just listen to me and listen carefully. Okay. Now if the shopkeeper is selling at ₹40, he is making profit.
and if he's selling it at rupees 20, he's suffering loss, then all of you, it means one thing is clear, that the cost of the article would be between 40 and 20 only. What do you mean by profit? Profit is you are getting more money than the cost of the article. Loss means you are getting less money than the cost of the article. So when you are selling at rupees 40, you are getting more money. And when you are selling at rupees 20, suffering loss, it means you are getting less money. All of you, in 40 rupees, you are getting more money. In 20 rupees, you are getting less money. तो 40 रुपीज में आपको क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है. 20 रुपीज में सेल करने में लॉस हो रहा है. सो ऑल ऑफ यू टेल मी, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि जो कॉस्ट होगा आर्टिकल का वो बिटवीन 40 एंड 20 ही होगा? तो ऑल ऑफ यू लुक एट द ऑप्शंस बिटवीन 40 एंड 20. 40 एंड 20 के बीच में कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी, 30. देखिए ये एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है. अब देखो क्वेश्चन पता क्या, एग्जाम स्टूडेंट्स जो है, आई हैव बीन टीचिंग सीसैट, एंड जब से 2011 से जब से इंट्रोड्यूस हुआ है सीसैट, मैं तब से सीसैट की क्लासेस ले रहा हूं. ओके, तो अपना लास्ट 11 पूरा 11 जो ईयर्स ऑफ पेपर है ना, पेपर आई हैव solved the paper so many times. I have taught so many students every year, thousands of students every year. And students क्या है, स्टूडेंट सबसे पहले पूछते हैं सर शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट. देखो याद रखो, इस एग्जाम में शॉर्टकट की जरूरत नहीं है. इस एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है. रोहित देखो 40 रुपीज में सेल कर रहे हो तो तुमको प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपीज में सेल कर रहे हो तो लॉस हो रहा है. इसका क्या मतलब है? जो कॉस्ट होगा आर्टिकल का 40 और 20 के बीच में ही होगा. 40 और 20 के बीच में कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, रुपीज 30. बस हो गया आंसर. देखो यही एप्टीट्यूड होता है. अगर आपका ये डेवलप्ड है तो ये आप क्वेश्चन, यू विल रीड द क्वेश्चन, यू विल लुक एट द ऑप्शंस, यू विल मार्क द आंसर. अरे क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस देखे, मार्क द आंसर. इट वोंट टेक इवन 30 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. आप देख लो मैंने क्या कहा था, आपको अटेम्प्ट करने अराउंड 40 क्वेश्चंस. अगर आप अराउंड 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आपको 3 मिनट्स मिल रहे हैं फॉर ईच क्वेश्चन. लेकिन आप याद रखना, आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप 30 seconds, 45 seconds, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे. इसलिए कई बार होता है ना कि कुछ क्वेश्चन सर लेंथी है, सर ये तो बहुत टाइम लग रहा है. कोई नहीं, यहां पे आप टाइम सेव कर रहे हो ना. ऑन एन एवरेज आपको 3 मिनट चाहिए ना. ऐसा तो है नहीं कि हर एक क्वेश्चन के लिए कट ऑफ टाइम है. ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, 3 मिनट बाद क्वेश्चन डिसअपियर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 3 मिनट बाद कोई नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपको क्या होता है, ओवरऑल ऑन एन एवरेज जो है आपको 3 मिनट चाहिए. तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आप टाइम सेव करते हो. फिर आपको कुछ क्वेश्चन पता है कि हाँ टाइम लगेगा, कोई नहीं, आपके पास टाइम रहेगा देने के लिए. आपके पास टाइम रहेगा देने के लिए. तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक, देखिए डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब आपके यूपीएससी में डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन नहीं आते. पहले आते थे, स्टार्टिंग में 3-4 ईयर्स आए, उसके बाद से अब नहीं आते, क्योंकि वैसे भी उसमें फ्रैक्शनल मार्किंग थी और अब क्वालिफाइंग हो गया पेपर. तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग तो भूल जाइए. तो सब चेक कर लेते हैं आपके जीएस पेपर 4 एथिक्स में, मेंस में चेक कर लेते हैं आपके डिसीजन की एबिलिटी.
फिर जनरल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, DI। तो देखिए बेसिक न्यूमरेसी में आपके कैसे क्वेश्चंस हैं, जो द क्वेश्चन विच आई टुक जस्ट नाउ, perfect example of your basic numeracy question. DI चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए DI बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। DI बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अगर एबव एवरेज है, और मैथ्स के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, एवरेज, परसेंट रेशियो, प्रोपोर्शन, अर्थमेटिक के, मैथ्स के नहीं, अर्थमेटिक के, आपको एवरेज, परसेंट एंड रेशियो, प्रोपोर्शन, अगर ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है तो DI के आपको DI में कभी 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 10-12 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपके अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं या 8 क्वेश्चंस मान के चलता हूं ऑन एन एवरेज, तो आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस यू कैन इजिली सॉल्व हाउ मेनी क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। क्योंकि क्योंकि इसमें DI में सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपको एक सेट में 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस होंगे। शौकत देखो DI क्वेश्चन टिप्स DI के लिए कुछ नहीं है, उसमें क्या है, एवरेज, परसेंट रेशियो, प्रोपोर्शन, 3 टॉपिक क्लियर। क्योंकि तुमसे क्या पूछ, व्हाट विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन द एग्जाम, परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, रेशियो, ओवरऑल एवरेज ऑफ 5 years, 7 years, like this. So from the given data you have to calculate these things only. So for this, average, percent and ratio, proportion, these 3 concepts must be clear. जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस क्या है, आपको बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे के सारे आपको जनरल मेंटल एबिलिटी में आपको सब कुछ आता है। इनफैक्ट यानी कि जो बेसिक न्यूमरेसी है, आई कंसीडर इट अ पार्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। मैथ्स, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी। पैसेजेस के लिए मैंने आपको क्लियर बता दिया कि पैसेजेस के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, एंड प्रैक्टिस आपको चाहिए। बिफोर एग्जाम you must have solved at least 50-60 पैसेजेस, कम से कम 60 पैसेजेस जो है आप करो एग्जाम से पहले। 60 पैसेजेस मींस किसी में 1 क्वेश्चन होंगे, किसी पैसेज में 2 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन तो पैसेजेस से करो। लेकिन हाँ, ये 100 क्वेश्चंस कब, जब आप अगर 100 क्वेश्चन इफ यू आर अटेम्प्टिंग, तो एटलीस्ट यू आर गेटिंग 50-60 करेक्ट। 60 तो करेक्ट हो, कम से कम 60% एक्यूरेसी हो, तभी फायदा है। डियर, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, अगर ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम्स की बात करूं, चाहे SSC हो, बैंक PO हो, UPSC है, कैट है, मैट है, जो जिनका सिलेबस ये नहीं होता, एप्टीट्यूड बेस्ड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस बेस्ड, वर्बल एबिलिटी बेस्ड, उनमें इंडिया का इजीएस्ट एग्जाम है CSAT पेपर। तो बाकी आप किसी एग्जाम में, अगर आप SSC में जाओ, बैंक PO में जाओ, तो आपको क्वेश्चंस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कैलकुलेशन, और क्वेश्चन भी टफ होते हैं, कैलकुलेशन स्पीड भी तुम्हें बहुत हाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स सोचो कि आप 500-600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप CSAT इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, और उन सब एग्जाम में कम से कम 10-15,000 क्वेश्चंस आपको की होने चाहिए, तभी आपकी स्पीड आती है। देन ओनली यू डेवलप स्पीड। उसमें टाइम कम रहता है, यू हैव टू आंसर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसमें तो कट ऑफ जाता है, क्वालिफाइंग इन नेचर तो है नहीं, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी हाई है, टफ भी है। ये जितने भी एग्जाम है वनडे एग्जाम, उसमें इजी,
तो यहाँ पे सीसेट में, यूपीएससी में आपको ब्यूरोक्रेट सेलेक्ट करने हैं, उनको इतना हाई कैलकुलेशन उनको नहीं चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अगर हाई कर दे और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी, तो क्या होगा, किसी एक सेगमेंट को क्या होगा, एक एडवांटेज मिल जाएगा, एज मिल जाएगा, फिर ये फेयर नहीं रह जाएगा एग्जाम। तो पैसेजेस क्लियर कर दिया। अब मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए देखिए, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, सी माय सजेशन, माय एडवाइस इज, इफ यू आर टारगेटिंग 2022 और 2023, अगर आप 2022 या 2023 टारगेट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार to introduce you all to the CSAT as well as any kind of inform you all about the batch. Okay, soon we are from 28th of January we are starting the CSAT classes. Okay, so the timing and other details you can get it from the administration. So 28th of January से classes start कर रहे हैं, Friday, Saturday and Sunday, week में 3 days classes चलेंगी. So Friday, next week, I've kept the classes kind of open for all. Plus, usme will be not focusing on any topic. It will be a kind of discussion based class, जिसमें हम लोग previous year questions and all discuss करेंगे, and then full fledged topic wise. Because here we provide around 100 hours of classes. We provide around 100 hours of classes, and 100 hours of classes and more than 500 questions, 600, some 700 questions. Okay, so 600, after practicing 600, 700 questions, and more than half of the questions are previous year. So more than half of the questions previous year questions. So based on it, okay, you develop your aptitude. क्योंकि जैसे मैंने क्या बताया आपको, मैथ्स का आपको जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिखाया, क्वेश्चन टफ नहीं था, प्रॉब्लम क्या, बस आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो, आप टच में नहीं हो, तो कहते हैं ना कि टच में नहीं हो। कोई कितना भी बड़ा बैट्समैन हो, अगर 2 महीने क्रिकेट खेले ही ना, 2 महीने बैटिंग करे ही ना, ग्राउंड पे अगर 2 महीने बाद उतरेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। वैसे ही प्रॉब्लम सबके साथ है, और कुछ स्टूडेंट्स के साथ खासकर प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको बचपन में मैथ से डर लग जाता है, मैथ्स का फोबिया हो जाता है। उनका तो टारगेट रहता है कैसे भी 10th पास कर लो, मैथ से पलरा छूटे। लेकिन उस समय पता नहीं रहता कि हाँ यूपीएससी देना पड़ेगा तो सीसेट में मैथ्स करना पड़ेगा। The thing is, you don't have choice now, you have to do it. So first thing is here in maths, now regardless of the class, जैसे बैच का जो मैंने था इंफॉर्मेशन आपको दे दी, मैथ्स कंपल्सरी नहीं देर, अगर लेकिन आपको क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ना मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस। आपको मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अराउंड 40 क्वेश्चंस अगर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो आपको हर टॉपिक से करना पड़ेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट। आपको मैथ से भी करना पड़ेगा, रीजनिंग से भी करना पड़ेगा, पैसेजेस से भी करना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्किप एनी टॉपिक। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत टफ नहीं आते हैं। देखिए रिमेंबर, मैंने क्या कहा, आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इट मींस यू हैव द लिबर्टी टू लीव 40 क्वेश्चंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Selection of questions plays very kind of crucial role here.
वरना पता क्या हो जाता है, कई स्टूडेंट्स के साथ आपने सुना होगा, अरे यार मैं तो करता ही रह गया, पीछे का क्वेश्चन ही नहीं था, अरे पीछे वाले ये तो क्वेश्चन आता था, ओहो मैं तो कर लेता, ये तो आ जाता। तो इसके लिए व्हेनेवर, जब भी आप क्वेश्चन पेपर ओपन करते हो, जैसे सपोज मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया, मैं क्वेश्चन पेपर जैसे मिला, तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिला मुझे, आई एम डिस्कसिंग पांडा जस्ट, यानी कि लिसन, ओके, जब भी जो भी बता रहा सुनते रहो। फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज, यू नो, गो अक्रॉस ऑल द क्वेश्चंस। पहले सरसरी निगाहों से, यूज द टर्म सरसरी निगाहों से, क्या करना है, ऑल द 80 क्वेश्चंस यू जस्ट गो थ्रू। व्हाई? बिकॉज देखो सबकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। किसी का मैथ्स स्ट्रांग होगा, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होगा, किसी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होगा, सॉरी। अब आप हमेशा स्टार्ट करोगे अपनी स्ट्रेंथ से ना, साथ में आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको लगेगा हाँ, उसमें भी जैसे मैथ्स में भी कुछ टॉपिक आपके होंगे जो आपके लिए बड़े इजी होंगे, आपके फेवरेट टॉपिक होंगे। तो आपने देखा ये क्वेश्चन, तो आपने हल्का सा पेंसिल से मार्क कर दिया कि हाँ ये क्वेश्चन, तो अब आप क्या करते हो, आप 5-10 मिनट्स आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, 5 मिनट्स में ही, 5 मिनट्स इज इनफ टाइम फॉर जस्ट ग्लांसिंग थ्रू द क्वेश्चन। उसके बाद आप क्या करते हो, जस्ट मार्क कर दिया। तो आप फर्स्ट गो में अब मार्क कर लिया, मान लीजिए जैसे आपने फर्स्ट गो में मार्क किया 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ही, आप उन 25-30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता है कि आप वो क्वेश्चन देख रहे हो, हाँ ये टॉपिक में फिर, तो उसको आंसर करने की क्या है आपको, यानी कि सक्सेस रेट जो है वो हायर रहेगा, उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, 90% से ज्यादा रहेगी कि आप करेक्ट आंसर आपको मिले। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट अगेन फिर देखते हो कि हाँ ये इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, इतना टाइम। साथ में आप स्पीड भी देखते हो, क्योंकि आप स्पीड क्या करते हो, जो क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छे से, जो टॉपिक आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दोज टॉपिक्स यू मस्ट नॉट टेक मच टाइम। जैसे मैंने क्या कहा था वहां पे, टाइम जब आप यहां सेव करोगे, तो फर्स्ट 25 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको 1 आवर लगने चाहिए, यानी अराउंड 2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। उसमें आपको जो है 30 क्वेश्चन अराउंड आप अटेम्प्ट कर लो 1 आवर में। फिर नेक्स्ट 1 आवर में, क्योंकि आपको टफ क्वेश्चन है या पैसेजेस में काफी माइंड लग रहा है, देन यू गिव यहाँ अराउंड 10 क्वेश्चन अगर और अटेम्प्ट कर लो, तो आई विल बी ऑन दी सेफर साइड, आई विल बी ऑन दी सेफर साइड। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर आप यू अगेन रीड दी क्वेश्चन पेपर, देन यू सेलेक्ट द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रख, डरने की बात नहीं है सीसैट से, सीसैट कोई हवा नहीं, लेकिन हाँ जैसा मैंने कहा, यू कैन नॉट टेक दिस पेपर फॉर ग्रांटेड, लापरवाही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो, अनटिल और अनलेस आपने भैया IIT IIM किया हुआ है, आपका पूरा बैकग्राउंड है, आपने कैट दिया हुआ है, तो अलग बात है। अगर नहीं तो आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। आपको अराउंड 200 आवर्स आप अपने दोगे, तो आप इन अराउंड 200 आवर्स अगर आपने दिए अपने, देन यू कैन इजिली क्वालिफाई दिस पेपर, कोई रोक नहीं सकता आपको क्वालिफाई करने से। डियर, जैन एंड में मिड ऑफ अप्रैल तक क्लासेस चलेंगी, यानी कि आपको वही है, इट टेक अराउंड 3 months। The classes will be CSAT का सिलेबस अराउंड 3 months इट विल टेक। डेली क्लासेस नहीं लेने के बजाय, यानी कि नहीं होता, हफ्ते में 3 दिन रहेगा, ताकि यू गेट इनफ टाइम फॉर गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस आल्सो इन द मीन टाइम। फिर डाउट्स हो तो फिर नेक्स्ट टाइम फर्स्ट वी cater the doubts and then proceed further। तो अराउंड अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल तक जाएगा। सो वेयर वाज आई, हाँ सामने क्वेश्चन पे। अब सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है,
देखो डियर, अगर आप जैसे मिस कर जाते हो, आप वीकेंड पे, तो वीकेंड पे जो क्लासेस हैं वो लाइव स्ट्रीम, यानी कि क्लासेस मैं ही लूंगा, आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस, आई एम टेकिंग द वेबिनार, आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस, ओके, एंड आई विल बी टेकिंग द क्लासेस और लाइव स्ट्रीम, ऐसे ही जैसे अभी क्लासेस आपकी चल रही हैं वैसे ही आपकी क्लासेस चलेंगी। आप जैसे अभी अपने यानी कि क्वेश्चंस आप रेज करो, वैसे ही अपने डाउट्स अगर आपको होते हैं तो यू लास्ट योर डाउट्स, वो पोर्टल के थ्रू, यानी कि सब कुछ कनेक्टेड रहेगा, आपको वैसे क्लासेस होंगी। एंड इफ यू मिस द क्लास, तो यू हैव द रिकॉर्डिंग्स, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एंड यू हैव द एक्सेस ऑफ द रिकॉर्डिंग्स टिल योर प्रीलिम्स एग्जाम। How many times you can watch the classes? You can watch it as many times as you want, dear. But I don't think a UPSC aspirant has so much time that he can watch more than twice. Because you don't have to just qualify CSAT, you have to clear overall exam also. तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा, आप रिकॉर्डिंग देखो, आप एक बार देखो, दो बार देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको याद रखना 40 क्वेश्चंस आपको छोड़ने भी है। 40 क्वेश्चंस में उसको रख लो, उसको छोड़ दो। एक चीज याद रखो, यहाँ पे आप रामानुजन या शकुंतला देवी बनने नहीं आए हो, एकदम फोकस्ड रहो। या यूपीएससी एस्पिरेंट स्मार्ट रहो, स्ट्रीट स्मार्ट जो कहते हैं ना आज के समय में, जरूरी है कि पता है यार इतना ही पढ़ना है जिससे कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, इतना पढ़ना, इतना कर लेना जिससे कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। टारगेट क्या है? बस यही है, एग्जाम क्वालिफाई करना। मेरा लेवल ये है, यहां पे अगर है ये कट ऑफ, तो मुझे अपना लेवल बस यहां तक पहुंचाना, यहां पहुंचा के कोई फायदा नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल जाएगा आपको, यूपीएससी आके आपको कोई सर्टिफिकेट या मेडल नहीं देगी अगर आप 200 में 200 भी लेते आए तो। यस अजय, मैं दूंगा क्लासेस के बारे में भी डिटेल दूंगा, अभी अभी पहले जनरल थोड़ा सा। अब रही मैथ्स एंड रीजनिंग की, फर्स्ट थिंग ऑल ऑफ यू मस्ट डू, कहते नहीं बेसिक रिक्वायरमेंट, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, यू सॉल्व लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि यार एक उम्र हो गई, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, घर वालों ने एडमिशन करा दिया फिटजी में, आकाश में, एलएन में, घर वालों के प्रेशर में आके जो है तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे आए हो, मैच्योर हो, ग्रेजुएट्स हो, या फिर ग्रेजुएशन में उतने में मैच्योर हो जाते हो, 18 प्लस हो जाते हो, 20 प्लस हो जाते हो, मैच्योरिटी आ जाती है। तो पहले क्या करो यार, पहले सीसैट का पेपर लो, सॉल्व करो, देखो तो कि तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है, तुम्हारा लेवल क्या भी, अपने आप को तो चेक करो, असेस करो। सेल्फ असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता ही नहीं है कि आप कहां स्टैंड करते हो। मानो फॉर एग्जाम्पल आपको डर लगा हुआ, सुना अपने दोस्तों से यार किसी सेट पेपर टफ होता है, क्वालिफाई करना ये होता है, बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पा रहा। कई जो जिनका जिनको पेपर टफ लगता है उनसे बात करोगे तो बहुत टफ बना देंगे। आप भी यही सोचे हो, ये इसी सोच में हो। पेपर लो, सॉल्व करो, आप सॉल्व करो, आप देखो यार मेरे तो 120 मार्क्स आ रहे हैं, फिर आपने एक और सॉल्व किया उसमें 115 आए, एक और सॉल्व किया उसमें 110 आए, तो आपने कहा कि अरे सही है मेरे लिए, तो क्या जरूरत है। आप कुछ यू सॉल्व फ्यू एक्स्ट्रा मॉक पेपर, एग्जाम से पहले 4-5 मॉक पेपर सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है क्लास अटेंड करने की। हाँ लेकिन आप सोचते हो कि अरे अरे ये तो क्या है, क्वालिफाइंग है पेपर, आराम से कर लेंगे क्लियर। इन पेपर जब करने बैठे और करके जब चेक किया स्कोर तो 50 आ रहा है, 55 आ रहा है। रिमेंबर, अगर घर में बैठ के इफ यू आर स्कोरिंग 50-55, तो एग्जामिनेशन हॉल में वो भी पोस्ट लंच 2:30 to 4:30, ऑलरेडी टायर्ड, मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड, वहां पे आपका स्कोर 55 से क्या हो जाएगा, 40 पहुंच जाएगा।
सारी जीएस में पेपर 1 में जो मेहनत की थी सारी मेहनत बेकार। तो इसलिए आप लास्ट 3 ईयर के पेपर सॉल्व करो, 19, 20, 21 के। देखो आप कितना स्कोर कर रहे हो, 100 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो इजीली, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 60, 50, 55 ऐसे स्कोर कर रहे हो, 70 स्कोर कर रहे हो, देन यस यू नीड गाइडेंस। तो टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है गाइड करना। टीचर का रोल होता है 20% है। यस अजय, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? अपना सीसैट क्लियर करके अपना रिलैक्स हो जाओ। So, I think we should take one more question. Yes, ask. Okay, don't hesitate. Ask the question. सर आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूट्यूब पे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट में अगर, या आपका वीडियो अगर बंद कर देंगे तो दिखेगा। एक सेकंड। जी एक्चुअली वो पैसेज राइट में है ना, और आपका फोटो भी राइट में आ जाता है यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा। Okay. हाँ, आपको चाहिए तो एस्केप मार लीजिए, पीपीटी ओपन हो जाएगा एंड उसको लेफ्ट में खींच लीजिए। अच्छा, स्किप कर लें, ठीक। या सर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। श्योर सर। हाँ, अब सही है। जी सर, थैंक यू। All of you just try to answer this question. गैलेक्सी A12 भैया टारगेट रखो एक अटेम्प्ट में क्लियर करने का। 6 अटेम्प्ट क्या, गवर्नमेंट भी 5 ईयर प्लान बनाती 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट आती है। प्रिंसिप प्लीज बी स्पेसिफिक, यानी कैसा हिंट चाहिए? सॉरी। अजय, to go through the syllabus, you solve the question paper, and then first assess yourself
See, option D here is neither one nor two. Option D here is neither one nor two. Done, all of you? Even policymakers and media have placed the blame for skyrocketing food prices on a variety of factors, including high fuel prices, bad weather in key producing countries, and the diversion of land to non-food production. Increased emphasis, however, has been placed on a surge in demand for food from the most populous emerging economies. It seems highly probable that mass consumption in these countries could be well poised to create a food crisis. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. First, oil producing countries are one of the reasons for high food prices. Okay. Second, if there is a food crisis in the world in the near future, it will be in the emerging economies. Now, all of you, see, I have seen many of you are getting answer one, option A, many of you are getting. Salendra, just in one session, okay, giving insight, this is, very big thing. No, this thing, it comes with practice, it comes naturally, okay. And certainly in one or two questions, you cannot get the, complete insight of how we are approaching the question and all. Takes a lot of time for each, passage. We devote few classes after solving few questions with me. Then only you'll understand that, yes, what is the approach. They still try to understand, okay. Now, here, given, following assumptions have been made. All producing countries are one of the reasons for high food prices. Right? All of you, please, many of you are getting here answer option A. Now, just see, policymakers and media have placed the blame for skyrocketing food prices on variety of factors, including high fuel prices, bad weather in key food producing countries, and the diversion of land to non-food production. Now, all of you here in this case, first thing it is using the term have placed the blame. Okay, there are two different things, blaming and second is producing the fact, the reason. Now here clearly mentioned have placed the blame for it on so many factors. And all of you, including high fuel prices. It is talking about high fuel prices, okay. But it's not talking about high fuel prices just because of the oil producing countries. Okay. Now, all of you, it's not clearly given here that yes, oil producing countries are only managing fuel prices and it is one of the factors for skyrocketing food prices. All of you, please be very attentive. So here, oil producing countries are one of the reasons for high food prices is definitely wrong. Is certainly wrong. Because first thing is, it is talking about they have placed the blame. They have not given any proof. And here the term also it is talking about including high fuel prices. So it is talking about high fuel prices, but it is not placing the blame also on the oil producing country. So all of you, first one is wrong. Now second one, again read. Given if there is a food crisis in the world in the near future, it will be in the emerging economies. Now, again, increased emphasis, however, has been placed on a surge in demand for food from the most populous emerging economies.
it seems highly probable that mass consumption in these countries could be well poised to create a food crisis. Okay. Now, all of you again read this statement, last statement, that it seems highly probable, okay, that food from the most populous emerging economy, probable that mass consumption in these countries could be well poised to create a food crisis. Now, here it is talking about creating food crisis. Okay. And here it is talking about it will be in the emerging economies. It is talking about word. And here when it is talking about create a food crisis, then it is talking about create a food crisis throughout the world. It is not only talking about emerging economies, because then it would have been clearly mentioned here. If there is a food crisis in the world in the near future, it will be in the emerging economies. So all of you see here, it is saying that mass consumption could create food crisis. This statement, and food crisis will be in the emerging economies. All of you, these are two different things. These are two different things. So therefore, 2 is wrong. Miraj, see here. Here in the passage, it is saying mass consumption in these countries could, be well poised to create a food crisis. So it is talking about mass consumption could create food crisis. So it is talking about universal throughout the world food crisis. Okay. And here in the statement here, the assumption that food crisis in the world in near future, it will be in the emerging economies. Now it is talking about only in the emerging economies. And here it is talking about create food crisis around throughout the world. Now creating food crisis. Now simple example is very apt example. Okay, China created coronavirus, but is China only suffering? The whole world is suffering or not? Is it clear? All of this question, just answer this question. Very simple, very easy question. Okay. Mhm. This year 2021 question only. Passage also 2021 question. This is also 2021 question.
Just cross check your answer again. All of you, no, after get, so just cross check. Now, all of you now leave it. Read the question. Given, replace the incorrect term by the correct term in the given sequence. 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43, 40. Okay. Where odd terms and even terms follow the same pattern. Where odd terms and even terms follow the same pattern. Now, all of you here. Now, this is a sequence. Now, in this sequence, okay, there's some pattern and given where odd terms and even terms follow the same pattern. So now all of you here, this is the first term, 3 is the first term, 2 is the second term, 7 is the third term, 4 is the fourth term, fifth term, and so on. So all of you, 3, 7, 13, they are what? Odd terms, means at odd places, first place, third place, fifth place. Okay. So here odd terms means what? Position, odd position. 2, 4, 10, and so on. These are the terms at, even places. So these are the even terms. Now saying odd terms and even terms follow the same pattern. What does it mean? It means that yes, there are two series now, two sequence. Odd term, they follow some pattern. Same pattern is followed by the even terms. So if I look at the odd terms, 3, 7, 7, 13, 13 to 21, 21 to 31, 31 to 43. Now all of you here, what is the difference? 4. Here what is the difference? 6. Here what is the difference? 8. Here what is the difference? 10. And here what is the difference? 12. Now all of you tell me here, is it following a fixed pattern or not? Yes, there is a fixed pattern. First the difference is 4, then 6, then 8, then 10, then 12. The difference increases by 2. The difference increases by 2. Now the next one. Now the even term. Here the difference is 2. Here the difference is 6. Here the difference is 8. Here the difference is 10. And here the difference is 12. Now all of you please be very attentive. Okay. Because still you all are not getting the correct answer. See, now here we have seen the difference like 4, 6, 8, 10, and 12. So now all of you, if the difference here is 4, 6, 8, 10, and 12, then clearly given odd terms and even terms follow the same pattern. It means here also the difference must be what? 4, 6, 8, 10, and 12. All of you, yes or no? Here the difference 10 and 12 difference is 2, 8 and 10 difference is 2, 6 and 8 difference is 2. Here only the difference is 4. It means here the difference must be what?
Here, the difference between the difference must be 2. It means now the difference here must be 4. All of you, yes or no? Here the difference must be 4, then only 4 difference here, 6 difference here, 8 difference here, 10 difference here, 12 difference here. Is it clear? Now, all of you, if the difference is 4, if the difference has to be 4 here, then either this term 2 is wrong or 4 is wrong. All of you, please listen. Either 2 is wrong or 4 is wrong. Now, all of you, 10 minus 6, we get 4. And 10 onwards, it is following the exact pattern. So, all of you, 10 minus 6, we get 4. So, yes, 4 is following the pattern or not? Yes, 4 is definitely following the pattern. Now, here the difference has to be 4. Then 4 minus 4, all of you, 4 minus 4, here instead of 2, you must have what? 0. Then only 0 plus 4, 4, 4 plus 6, 10, 10 plus 8, 18, 18 plus 10, 28, 28 plus 12, 40. Means instead of 2, you must have here 0. So if you will have here 0, then 0 and 4, the difference will become what? 4, like here. And then the difference 6, then the difference 8, difference 10, difference 12, and so on. It means all of you, what was the incorrect term here? The incorrect term here is 2. The incorrect term here is 2. And the 2 and 2 must be replaced by 0. 2 must be replaced by 0. Thank you, Saurabh. You know, it comes with practice. Okay, just you need to solve few questions. You need practice there. And this exam requires practice. And basically our classes also, it is focused mainly on practice. More the number of questions you solve, more comfortable you get. So all of you now here, this was, you know, about, you know, today's session. Okay, the thing is we have taken 3 questions. So you all have seen the type of questions which we get in exam. Those of you who have not, you know, earlier seen previous year paper. So this is the standard of the paper. The questions, yes, they are not tough, but they do need practice. And here, as I told you all earlier, we are starting the course from 28th, and will be 3 days a week. Each day the classes will be for 2 to 3 hours. No, some day 2 hours, some day 3 hours, because it depends on the topic. You know, actually what happens, few topics are really tough. So in 2 hours, also the students, you know, for students it is more than enough. Few topics are easy, so extend the session class for 3 hours. So it depends on topic to topic. So it will be, the class will be in the morning only, the morning timing. And I think you all know the other system, that if you miss the live classes, as I told you all, the recordings will be available. We'll be providing around 100 hours. I'll be taking your complete CSAT, okay, math plus listening and then reading comprehension passages. So in each topic, see, the thing is, you know, maths and reasoning, each topic will be solving around 20 to 25 questions. Shruti, if you are preparing on your own with respect to CSAT, then first thing, as I said earlier, solve last 3-year paper. If you are scoring easily more than 100, then no problem, you solve last, you know, just paper of 16, 17, 18 also. Plus, before exam, in the month of May, solve 3-4 mock papers or 5 mock papers. That will be more than enough.
But if you are scoring, lesser, then just, check in which topic you are scoring lesser. For example, in passages, if you are missing, then when you go through the answer key, you try to find out your error. We say na spot the error. So all of you just spot your error and then try to rectify that error. If there is some problem in the basic concept of on any topic, just go through that topic. Any topic, I think the content is available online itself. So you can just go through that topic and you can. But yes, it becomes a task. It becomes a task to identify important things. But depends on your, level. No, there no need of solving NCRT. No need of solving NCRT, not required at all. For CSAT, please don't look at NCRT. Because that is, the exam pattern is different, the approach is different, everything is different. That is for subjective exam. This year it is objective. The type of question is different. Okay, plus many things, geometry, mensuration, and all. Geometry, they don't ask the question. Geometry, mensuration, sometimes they ask one question or two questions. Many question, linear equation, quadratic equation. There are many topics not required at all. See, if you want, in market you can find many objective books. Okay, maths objective books you can find. You go through those books, solve few questions on few common topics. See, few topics very very important: LCM, HCF, average, percent, ratio, proportion, time and work, time, speed, and distance. At least in maths, these topics must be clear. Then DI. Then in reasoning, blood relation questions also very important. Direction sense test, very simple, very easy. Princey, yes, you can start. You start with the NCRTs, okay. That is not for CSAT, rest of you. Okay, you start with NCRTs, it's fine. You start studying first, complete it, okay. And read it thoroughly. So I hope I was, clear, kind of successful in clearing your doubts and kind of making you all clear about this paper CSAT. So if you enjoyed this session, McGraw-Hill, no, never buy McGraw-Hill. TMH books, please don't buy TMH books at all. Because TMH books, there are many questions which are not asked in any of the exam. They are too tough. Arihant books, you can go through Arihant books. Arihant publication, you can, purchase this complete CSAT, previous year question plus few extra questions. That is more than enough. So I think now we are running short of time, 9:30 of the deadline. All of you, thank you all. Okay, for attending this session. Please, take this exam seriously, take this paper seriously. You can go through RS Agrawal. Okay. So all of you, thank you all. Okay. So yes, it is good. It is good. All of you, good night. Take care. Study hard. No, that is enough, dear. That is enough. Arihant books are there in the market. RS Agrawal books. But yes, don't buy the books online. Just go to the bookshop near. Go through the book, because different person have different requirement. So based on your requirement, just you purchase the book. Chand publication books are nice. Arihant publication books are nice. So you can go through those books. Yes, it will be more than enough. See, if you are relying on the classes, then I promise you all that if you attend the classes, then certainly after solving more than 500 questions, you can easily score 100 marks if you seriously attend all the classes. If you attend all the classes, then no need of any book, any study material. Because I will be giving you all enough practice questions and the
basic concept and all. So no need of any book, anything extra. Okay. The classes will be sufficient for you all. Okay, thank you, all of you. Good night. Take care and keep smiling. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. Thank you, students, for attending this. Remember, 23rd से बैच शुरू होने वाला है. हफ्ते में 3 दिन होने वाली है. 3,000 plus GST की फीस है. Only up till 26th of January. उसके बाद ये अपने ओरिजिनल फीस में चला जाएगा. So this is a discounted offer. Thank you so much, sir. Sir, आप close कर सकते हैं. Okay. So thank you so much. And links आपके dashboard में, and you can also visit www.ikrais.com for all the new courses. Thank you so much. Have a good night.